All right, viewers, welcome back. You're watching State of War 2024, your one-stop destination for all news related to elections, politics, and anything which was going to lead up and tie into the narrative of 2024. And with that was the first election of 2023, where people cast their ballot today. 60 seats went to vote in the state of Tripura. The state of war northeast has officially begun, with Tripura being the first state to go into polls. As per the latest updates, Tripura recorded a voting turnout of 81.1%. That's astounding. Voting is still underway. Actually, voting has ended right now on all 60 constituencies. 259 candidates are in the poll fray. The voting is being held under tight security, and the counting will be held on March the 2nd. Meanwhile, an incident of bombing was reported allegedly to intimidate voters in Tripura's Bishalgarh area. All of this took place yesterday, viewers, much before the polls. Meanwhile, Tripura Chief Minister Manik Saha blamed CPM and Congress for the incident. They counter-blamed both of the incumbent party, which is the BJP. All right, let's quickly listen in to all reactions. मनीष जी, क्या कहना चाहिए चुनाव के दिन है, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं सर? किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा है, पीसफुल है। ये आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लाइन में खड़े हुए हैं। चीफ मिनिस्टर से क्या, मैं तो साधारण एक वोटर हूँ। चीफ मिनिस्टर से क्या लेना देना? क्या बताइए कि मैं बाहर से आया हूँ, अगरतला में लोग क्या सुबह सुबह वोट डालने आते हैं? एकदम सवेरे आ जाते हैं। हम लोग भी अपील किए, ये लोग आए सवेरे सवेरे। कल रात कुछ इलाकों में वायलेंस की भी खबरें आई, क्या कह रहा है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट से, क्या लग रहा है? देखिए, ये लोग कोशिश करेंगे। दोनों संतरास पार्टी है, सीपीएम भी संतरास पार्टी है, कांग्रेस भी संतरास पार्टी है। तो ये लोग दोनों मिले हुए, हम लोग को मालूम था ये सभी करने वाला है, और आरोप हम लोग को ऊपर देंगे। तो अब हमारे पास तो अभी है नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है अभी, और ये लोग करेंगे ये सब चीज। ये लोग ही करते हैं। हर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और हम किसी निर्वाचन को छोटा बड़ा करके देखते नहीं है, और क्योंकि वो निर्वाचन जनता के बीच में होती है, जनता सर्वोपरि है, और जनता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। 2018 में शून्य से सरकार हम लोगों को दिया है जनता ने, और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता के सेवा में नियोजित होगा। हमारा बिगेस्ट चैलेंज सीपीएम है, और कई स्टेट्स में हमारा बिगेस्ट चैलेंज, कई सीट्स में हमारा बिगेस्ट चैलेंज बीजेपी है। तो ये ओवरऑल एक वो नहीं है। बहुत सीट्स में सेकंड पोजीशन में बीजेपी आ रहा है, बहुत सीट्स में सेकंड पोजीशन में सीपीएम आ रहा है। तो आपका क्या लग रहा है कि परिणाम अच्छा होगा आने वाले दिनों में? आई एम वेरी क्लीन एंड वेरी क्लियर in my thinking that the people of Tripura will give me a chance. রামনগর এলাকায় কিছু সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল, যা রিপোর্ট আমাদের কাছে এসেছে। তাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশকে ব্যবহার করে মানুষকে সাহায্য করেছেন, সেই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। উদয়পুরে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানেও ভোটারদের নানা। Cutting across to my colleague Milan Sharma, who's joining me live from Agartala with the latest. Milan, 80% is what the voting turnout is settling down to, and I would reckon it will settle down at least 2% more than 80%, because if 80% was the marker for 4 p.m., then Tripura has really gone out and voted. Yes, Preeti. In fact, when we were reporting at 4 p.m., the count of people that were still inside the polling booths was huge. And that is the official number that's come out from the Election Commission for 4 p.m. That's when the voting stopped in Tripura. But of course, 81%, it's going to stretch up to at least 2 to 3% more. We'll have to wait for those final numbers, because there was a huge amount of crowd inside the polling stations. But having said that, yes, Tripura did come out in huge numbers to vote. We've been reporting since morning, women, men, everyone, and the entire city, in fact, the entire state, at least in Agartala city, remained sleeping because the shops were shut.
people wanted to vote, go back home and discuss politics, with this being a very interesting election and the roadmap to 2023-2024 as well for the BJP. But it remains to be seen whether the party, the BJP, will be able to cinch another victory for this state, because the mandates that people spoke about, whether it's security, whether it's safety for women, whether it's the schemes that the BJP has brought in, whether it's development for the state, were prime concerns of the voters. Of course, Tripura Motha, and we'll be discussing this throughout the day, one of the key factors, kingmakers, big players in this election, and whether that left vote share will drop from the previous election, and whether Congress will be able to up its vote share from the earlier 2% is also a big question, and whether the Tripura people accept the left and Congress alliance will also have a litmus test this time. But for the BJP, certainly it will be a test altogether, because those 25 seats across the northeast, and not just in Tripura, for the general elections will also hold mandate. And whether Tripura will repeat what they do initially, is go with the central government in the center, because the state needs funds for development. Is that something that is still playing in the back of the mind of the people in Tripura, will be a deciding factor on March 2.